friends, my name is Shubhra and welcome back to my channel. Today I am in City of Lakes, Udaipur, and you can see one of the lakes behind me. This is Lake Pichola. मैं अभी जिस लोकेशन पे खड़ी हूँ वहाँ से लेक पिछोला का बहुत ही प्यारा व्यू है. यहाँ से मैं पूरा ओल्ड सिटी से लेके पूरा न्यू सिटी देख सकती हूँ and it is an amazing view. So right now I am staying at this beautiful boutique hotel called Raj Vilas Hotel. So if you are looking for a decent stay in the central location of Udaipur, ये होटल अच्छा है, decent है, प्राइस में भी है, बजट के हिसाब से भी सही है. So इस होटल के रूम्स भी decent है, ये बजट फ्रेंडली भी है और nicely built है, साफ सुथरा है कोविड टाइम्स के हिसाब से. और इस जगह से लेक पिछोला का रूफ टॉप से व्यू बहुत प्यारा आता है, which you are going to see in some time. So I am in Udaipur and today I am going to be exploring the touristy places of Udaipur. So let's go. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. I'm walking towards the city palace Udaipur और मैं अभी एक ब्रिज पे आई हूँ. ये पूरा ओल्ड सिटी है मेरे पीछे, यहाँ पे एक घाट है और हम द ऑपोजिट साइड जा रहे हैं. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. ये महल 400 साल पहले बनवाया गया था और यहाँ पे कभी महाराणा प्रताप जी का भी राज था और ये मेवाड़ के रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हुआ करता था. द एंट्री फीस ऑफ दिस पैलेस इज़ 300 रुपीज़ पर पर्सन और इसमें कैमरा फीस भी इंक्लूडेड है. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का कंसेशनल एंट्री चार्ज है. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? गाइस, सिटी पैलेस के बाद हम आए हैं करणी माता मंदिर और ये एक हिल टॉप पे है. इस पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, नहीं तो रोपवे भी बना हुआ है. रोपवे का कॉस्ट है 120 रुपये पर पर्सन और इससे आप फटाफट से ऊपर पहुंच जाते हैं. और मैंने सुना है कि यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम वही चेकआउट करके आए हैं. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder. So guys, रोपवे के बाद थोड़े से स्टेप्स से जो ऊपर चढ़ने पड़ते हैं और एक रास्ता बहुत पिक्चरस्क है. सो रोपवे की राइड के बाद हम इस पॉइंट पे आए हैं जो करणी माता का एक्चुअली फ़ोटो पॉइंट है और यहाँ से पूरा लेक का व्यू है, दिस अमेजिंग व्यू एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है और यही आई थिंक यहाँ की बेस्ट सेलिंग पॉइंट है. सो इस लोकेशन से उदयपुर की दोनों लेक्स दिखती है. अभी पास वाली तो है पिछोला लेक और अगर आप पीछे देखें तो वो है फतेह सागर लेक. और इस पॉइंट से सिटी पैलेस और लेक पैलेस का बहुत अच्छा व्यू आता है. Yeah,
गाइस दिस इज इवनिंग टाइम और हम अभी डिनर करने आए हैं नियर द घाट। ये मेरे पीछे पिछोला लेक है और अभी यहाँ का वाइब बहुत ही सुंदर है। द लाइट्स हैव लिट अप शाम को और ये जो मेरे पीछे सिटी पैलेस का व्यू है बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। Few people suggested us this place so we've come for dinner. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. टिल देन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।